लो इससे में से। वो रॉकेट सिंह देखिए ना, उसमें वो कहते नहीं पेंसिल सेल कर मेरे को, कहते यूं करके पकड़ाते उसे कि ले पेंसिल सेल कर। और पेंसिल कैसे सेल करोगे तुम? बाय जनरेटिंग द नीड। तुम्हें पेंसिल की नीड क्यों आएगी? तो वही बात है, डॉकेक्स फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करा दो ताकि लोगों को किस चीज की नीड जनरेट हो, एमएस ऑफिस की, तभी तो लोग खरीदेंगे। अगर हर जगह चल जाएगा कोई क्यों खरीदेगा? यू हैव टू डेवलप नीड। मैक में भी सेम चीज होती है, सब में जगह सेम चीज होती है। अभी तो कभी मैं कैपिटलिस्ट बात करता है, जब कभी टाइम मिले तो सर्च करना कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट क्या होता है, काफी अच्छा टर्म है। इवन दो मतलब कैपिटलिस्ट वर्कर्स के लिए बहुत बुरा होता है, बट एट द एंड वी ऑल वांट टू बी कैपिटलिस्ट। जो टॉप पोजीशंस बताऊं दे प्रॉफिट आउट ऑफ इट। You make a worker work for 8 hours, 12 hours a day, and you get paid the salary for 8 hours a day. Is it fair? फिर लोग क्यों काम करते हैं 12-12, 14-14 घंटे ऑफिस में? क्या लिनक्स कॉन्कर? डेफिनेटली क्लाउड का लिनक्स पे होस्टेड है। कॉन्कर की बात तो है नहीं, वो तो वहां पहले से ही राजा है। लाइक एक्चुअली जो कि अगर तुम्हें अनेवर हो, शायद एक स्लाइड थी लास्ट टाइम जो लिनक्स की निकल गई, उसमें इतना कि हमने क्लाउड सर्विस की बात करनी थी, बट मेरे ख्याल से शायद काफी ब्रश अप फास्ट हो गया। सो ऑल द गूगल के जितने भी सर्वर्स हैं, दे आर ऑल होस्टेड ऑन क्लाउड्स ऑफ लिनक्स। पीछे बैकग्राउंड पे लिनक्स की सर्विस चलती है। इवन जिस कंपनी के मैं काम करता हूँ, हमारे वी टेक बैकएंड ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी पिमको, वी प्रोवाइड देम सर्विसेज। तो हमारा पूरा बैकएंड का जो सर्वर है, इट्स ऑन सोलारिस एंड लिनक्स। विंडोज यूज नहीं होता बिकॉज विंडोज पे चीजें सिक्योर नहीं होती। फाइनेंशियल डेटा वी कांट ऐसी लूज नहीं छोड़ सकते विंडोज पे, काफी ज्यादा वो है, ट्रोजन्स होते हैं वगैरह, सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं। सो फाइनेंशियल डेटा वी एक्चुअली आर रिस्पांसिबल लाइक से मैनेजिंग $3 ट्रिलियन बैकग्राउंड पे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन, इट्स ओनली होस्टेड ऑन सर्वर्स ऑफ लिनक्स प्रॉपर। एनी अदर थिंग और कोई वीडियो? लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। Hi everyone, my name is Carol Smith and I am here today to talk to you about the Google Summer of Code program that I manage. For those of you who don't know, Google Summer of Code is an online international program that is designed to get university students engaged and participating in open source software development. We think Google Summer of Code is a pretty cool program because the students get real-world coding experience. They get references from within the open source organizations that they work with. The open source organizations get more developers and more development time, and more open source code is created for the benefit of everyone. This year marks the 10th instance of the Google Summer of Code program. And so I wanted to take a couple of minutes to say a really profound thank you to our community. Some of you are sitting in the audience today, and we could not have made the last 10 years as successful as they have been without your support and participation. So thank you. Please give yourself a round of applause. In honor of the 10th instance of the program, we did 10 things to change and promote the program, and I wanted to give you a few of the highlights from this year. One of the things that we did is we raised the student stipend from $5,000 to $5,500 for a student who successfully completes the whole program. We accepted more students than we ever have before, 1,307 in all. And those 1,307 students were selected from amongst 4,420 applicants from all over the world. In all, over the last 10 years, we have had 8,616 students participate in Google Summer of Code, which is an amazing number. Yes, thank you. We also accepted more mentoring organizations than we ever have before this year, 190 in all. And those 190 organizations were selected from amongst 372 applicants, again from all over the world. In all, over the last 10 years, we have had 486 organizations participate in Google Summer of Code. Again, an amazing number. Lastly, we're going to be holding a reunion in October for our students, mentors, and organization administrators who have participated in the program over the last 10 years. We're inviting everyone to visit us in California and spend 3 days with us. That's longer than the Mentor Summit that we typically hold for this program, and we expect it to be almost double the size.
We estimate that over the last 10 years, our students have created over 50 million lines of code. Again, a really amazing number. Those students have largely been from the United States, India, and Germany. But over the last 10 years, we've noticed a shift away from applicants in the US and Northern Europe, and we've seen more and more students from India, Southeast Asia, and other developing nations. For the last 3 years in a row, we've had more students participate from India than we have from the United States. We also see new countries represented in the Summer of Code program every year. The last 2 years, we've had students from Cameroon, Tunisia, Honduras, Kenya, Malawi, and Uganda. And of course, we're always trying to do more outreach to the underrepresented areas and developing nations of the world, and we can always use your help in getting the word out to more and more of those students. It's a common misconception that students who participate in Google Summer of Code are all majoring in computer science. We see students majoring in dance, film, philosophy, linguistics, philosophy, and many other majors as well. It's also a common misconception that students who participate in Google Summer of Code are all undergraduates. While 68% are, we also have 22% who are getting their graduate degrees and 10% who are PhDs. We've also had some really amazing success stories come out of the students every year from Google Summer of Code, and I wanted to talk about just a couple of those. We had a GSOC student who was at CERN when the Higgs boson was discovered. We had a GSOC student who competed in the London Summer Olympics in race walking. We had a GSOC student who received an Academy Award that began as his GSOC project. And most importantly, I think, is that we have students every year who begin as novice coders and go on to become core contributors for their organizations, which I think is really the best success story of all. So again, I want to say a really, really profound thank you to our community. We really could not have done it without your success, your participation and support of the program. And so we hope that you'll help make us in the next 10 years even more successful than these last 10 years have been. The website, if you're interested in learning more about the program, is google-melange.com, and that's a little URL for you to check out our discussion list if you have any questions you'd like to ask about the program. And finally, I just wanted to leave you with a picture from our Mentor Summit from a couple of years ago to show you that we have a really thriving and vibrant community, and this is a really great program. So again, thank you. सर बिगिनर कैंडिडेट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर और प्रोसेसिंग क्या है? लैपटॉप खुद का बनाएगा, कोई भी लेटेस्ट लैपटॉप जो भी हो सब इंस्टॉल हो जाता है। कोई भी 20,000 वाला भी ले ले, कोई से भी लैपटॉप उठा ले, इवन नोटबुक में भी जो नेटबुक्स आती है जिसमें इंटरनेट चल सकता है उसमें भी इंस्टॉल हो जाता है, कोई से उठा लो। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब तुम्हें बहुत ही महंगा वाला लैपटॉप खरीदना, नहीं, नो रिक्वायरमेंट। जैसे जिन अरे i5 तो बहुत, मेरे लैपटॉप में भी i5 फर्स्ट जनरेशन डला आज तक चल रहा है। i5 तो बहुत अच्छा है, तारीफ करनी पड़ी ना मेरे लैपटॉप में। खैर, अदर देन दैट, वीडियो इंटरेस्टिंग थी। हाँ, क्या है ये समर कोड? अब दो ऑप्शन है हमारे पास। टाइम कितना हो रहा है? पहले तो 12:30 हो रहा है। या तो हम लोग हाफ एन आवर में इसको कवर कर लें, तो कवर करने इसको, चलो ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस गूगल समर कोड। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि क्या है, कैसा है। चलो, लेट्स फर्स्ट मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा करण प्रताप। He was the first from our UIT। अब यहाँ पर सारे UIT वाले मैक्सिमम सिवाय एक के, जो कि आज हमारा स्पेशल गेस्ट है, गौरव। Karan Pratap was the first student from Karan was the first student who successfully completed Google Summer Code in the year 2011. Honestly, he was my inspiration. Like उस टाइम पे मैं आता हूँ ऐसे ही अजीबोगरीब कपड़े डाल के यूँ करता हूँ, तो ऐसी बातचीत हुई। उस टाइम पे सॉफ्टवेयर पीरियड में करवा रहे थे और मैं उस टाइम पे लिस्ट में था।
So and I just went to him and said कि मुझे भी करना है, मैंने लर्निंग करेगा, मैं ऐसे बड़ा सब कुछ मैंने लर्निंग करेगा, मैंने तो सब कुछ करेगा, मैंने आरसी भी कर लिया है, मैं सब पूरा दुनिया पलट दूंगा. So he's when I said तो आपने कैसे तो actually वो भी बात नहीं थी, मुझे गूगल समर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं था. Actually he just said अच्छा ठीक है, मैं ना तेरे से बात करता हूँ, मेरे को वीजा पे जाना. मैं कहा क्यों वीजा? कह रहा है कि मैं ना गूगल के माउंट व्यू वाले ऑफिस में जा रहा हूँ. वहाँ मेरी आंखें चौड़ी हो गई. गूगल के माउंट व्यू के ऑफिस में जा रहा हूँ, क्या किया ऐसा? That's when I started interrogating him, and I पीछे पड़ गया, मुझे बताओ how to get there. मुझे गूगल के ऑफिस जाना है, मुझे घूम के आना है. माउंट व्यू का ऑफिस मजा नहीं है, बहुत प्यारी चीज है, वहाँ सोने के लिए कमरा है, वो अपना खुद का खाना पकाते हैं, एंड्रॉइड की सारी चीजें. अच्छा ये पूछें से एंड्रॉइड वाला, एंड्रॉइड के वर्जन के नाम कैसे पढ़ते हैं? नहीं आइडिया? सबसे पहले क्या था? एक्लेयर से पहले कौन सा था? उससे पहले था कोई? कपकेक था. ए से बताओ, ए वाला कौन सा था एंड्रॉइड का फर्स्ट वर्जन? छोड़ो. बी. सी से तो पता है कपकेक. डी. डी क्या? ई. एफ. रोयो. रोयो. जी. एच. हनीकॉम. आई. जे. के. एल. Lollipop. Lollipop. लॉलीपॉप. Sir, it is rumored अभी तक वो लॉलीपॉप. एंड्रॉइड एल कहा जा रहा है अभी तक उसका, वैसे उन्होंने मुझे Official नहीं आया अभी. ऑफिशियल नेम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. नहीं नहीं एंड्रॉइड एल कहा जा रहा है अभी तक, रेफर तो ऐसे किया जा रहा है. बेसिकली उसकी ऑसमनेस पता है क्या? क्यों खाने के नाम रखते हो लोग अपने उस पे? सब कुछ खाने की चीज है ना. ये चीज भी मुझे करण ने बताई थी. ऑफिस में मिलता है. हाँ? एक साल के जबरदस्ती खिलाएगा तू. लास्ट ईयर जैसे उन्होंने एंड्रॉइड किटकैट के साथ उन्होंने नेस्ले किटकैट और पार्टनरशिप की थी. आई थिंक दे माइट ट्राई समथिंग सिमिलर विद एंड्रॉइड एल आल्सो. दैट इज व्हाई दे हैवंट नेम्ड इट. ठीक है, एक तरह से ज्यादा पब्लिसिटी का तरीका है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के साथ. यू नो ट्राई टू मैच सम प्रोडक्ट. देयर इज अ कैंपेन बाय द वे by Indians. It's called Name Android L Laddu. So you can go online and sign it if you like the name. So the employee at Mount View, California, they get that dish is free for them. और उन्होंने बस नाम रख दिया एंड्रॉइड का, बस उनके कैंपस में आपको फ्री की मिलेगी, जब मर्जी चाहो खाओ. जबरदस्ती नहीं खिलाते, फ्री का देते. जबरदस्ती नहीं खिलाता कोई कि तुम्हें खाने खाना है. So that's why this was also like he was the first one to tell me about that. I learned a lot of things from him while working with him. So उस टाइम पे I learned कि okay ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट है. मैंने आज की डेट की स्टार्टिंग में कहा था it's all about awareness. तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम करोगे कैसे? मेरे को उस टाइम तक पता नहीं था. The day I got to know about it, मैंने उसके उस साल पूरा वर्क किया. And next year me, Ankit Bhatnagar and one more of our senior, Nitin Chadda, we three completed GSOC the next year. But it was all because we had inspiration from one guy who had successfully. Well, he made a milestone. उसने एक success कर दिखाया. We all gained the confidence we can also do it. Before that, I don't know if our seniors tried or not, but we were not successful. And we started the next year we three got selected, and then the next year. A lot of us tried actually, I think, right? There were a lot of entries from our college, only one got selected. That's because the competition is pretty tough. It's not easy, not always easy. मेरे लिए इसलिए easy था, मैंने बड़ा धोखेधड़ी से काम चलाया था. नहीं वाला काम तो करना ही पड़ता. It's not that because actually जिस project के लिए मैंने apply किया था, उसके last year भी किसी ने apply किया था, and that student didn't get selected. पहले सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं, फिर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा. काफी इंटरेस्टिंग है. धोखाधड़ी करके घुसा तो था, बट घुस गया, काम भी किया है काफी कुछ. सो लेट्स स्टार्ट विद GSOC. अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है ये, पता है देखो कितना ऑसम बच्चा, उसने मेरे नाम को आगे डाला है. दैट्स अ प्रोजेक्ट आई डिड एक्चुअली. सो टू पार्टिसिपेट इन GSOC, what you need to do is you need to get associated with one open source organization. तुम किसी भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हो. इट मे बी Ubuntu, इट मे बी VLC, इट मे बी Mozilla, इट मे बी KDE, इट मे बी Chromium, any other organization. There are n number of organizations, and n is equal to 380. And at one time, this n can participate at the quantity of 190 organizations.
Google Summer Code only takes in 190 organizations or 180 organizations at a time. सर ऐसे ही एक रिसेंटली IBM में भी शुरू किया था जिसके बारे में बताया था ब्लूमिक्स को भी यही चीज़ था कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो उन्होंने ब्लूमिक्स से एक वो दे दी पेज दे दी जिस पे आपने काम करना मतलब एज अ ब्लूमिक्स फाइल उससे सेव करना वो भी सेम चीज़ वही मैं कहता कि मेरे को इसको एक्सप्लोर तो करूंगा मैं डेफिनेटली, बट यस थैंक यू फॉर टेलिंग दिस. पूरा नाम क्या था? IBM ब्लूमिक्स स्पेलिंग? हाँ मैं लॉलीपॉप सुन लिया, रुक जा एक मिनट, पहले उसकी बात सुन लिया करो. हाँ बेटा, बैक में भी कई लोगों को चॉकलेट नहीं मिला है. बैक वाला आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं किया है मैंने आंसर. अच्छा, अच्छा किया? किया. हाथ खड़े कर लो, देखो मेरे को पता था. रेड शर्ट में एक दिस वन गाय, बाकी में कोई याद नहीं है. फ्री की चॉकलेट्स हैं, बट तुम्हें थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा ना. लाइक बिग बैंग थ्योरी देखा है? हैं? उसमें याद है शेल्डन एक एक्सपेरिमेंट करता है पेनी के साथ कि जब पेनी कुछ अच्छा करती उसको चॉकलेट पकड़ा देता था. व्हाट ही वाज डूइंग? किसके साथ? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. आके ले लो यार. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. किसको, कौन था? मतलब एक्चुअली तुम्हें तो फ्री की चॉकलेट मिलती, कोई भी आके ले लो, उठा लो. तो यार हाँ मतलब बोलो फिर आप ले ले. अब तुम में से कोई क्लेम नहीं कर रहा भाई, काम करा तो क्लेम करो. तुम क्लेम नहीं करोगे तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से? लास्ट चॉकलेट कोई क्लेम कर रहा है? पूछो ना क्वेश्चन, हम तो कह रहे हैं. कितनी बढ़िया, कौन सी 50-60 बढ़िया पूछो तो, बट हम खा जाएंगे लास्ट में. That's the simple we can do. Okay, so where were we? Yeah, to participate in Google Summer Code, these are the organizations. So how does this program start? Google क्या करता है? हर साल एक प्रोग्राम लेता है, उसे they call it Google Summer of Code. And under this program, they have this tagline: Flip bits, not burgers. समझ में आया मतलब? Flip bits, not burgers. यानी कि कोडिंग करो, बर्गर ही मत खाते रहो पूरी गर्मी की छुट्टियों में. Because in US there is a long summer holiday, like only 3 months की summer holiday is proper. So that's why to make it, to help them utilize it better, they have this program Google Summer Code. यार अभी लिखा है ना flip bits not burgers सबसे top में. So they use this language. So let's get back to that accepted organizations only. Google Summer Code की tagline है actually. हमेशा use करते हैं. So let's get back to the accepted organizations. तो गूगल हर साल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है. नाउ व्हाट डज दैट डू? वो सारी ओपन सोर्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केडी जो भी हैं, एक्स लेट्स से, अब कुछ और नाम लेते हैं जो कि तुमने ना सुना, Xorg, Gentoo, देन ब्लेंडर, देन एक्लिप्स प्रोजेक्ट भी जाता ही है, देन देयर इज जियो स्टेशनरी का भी एक जाता है, देन बैटल फॉर वेस्ट नॉर्थ गेमिंग का है वो जाता है. दीज आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. मैं वही कह रहा हूँ कि n is 180, n number of organizations अप्लाई कर सकते हैं एक साल में, दैट इज 180. So 180 organizations, roughly 180 organizations get selected every year. Now, once these organizations are selected, then you can apply to these organizations for the program. अभी तक क्लियर है? Are you able to follow me? Google ने एक प्रोजेक्ट होल्ड किया. Google ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग 1200 बच्चों के साथ फाइनेंस कर सकते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हम लोग 60 बच्चों को अपने अंडर मेंटोर कर सकते हैं. We can mentor 30 students, we can mentor 3 students, we can only mentor 1 student, and they apply. And वो अपना रीजन स्टेट करते हैं why we need these students. How are we gonna benefit the whole world by taking these students in? ये चीज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई करती है. Then Google selects them on their performance. कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा परफॉर्म करती आ रही है. They select various organizations. Roughly about 180 organizations. Then you can हर ऑर्गेनाइजेशन में देखो, साइड में देखो तो स्किल्स लिस्ट करते हैं. टैग्स दिख रहा है, कोई लिख रहा है हमें GCC चाहिए, कोई 3D लिख रहा है, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स लिख रहा है, कोई रेंडरिंग लिख रहा है. So these are the tags. ये बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन लैंग्वेजेस या इन स्किल सेट के अंडर में हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं. सो व्हाट यू गो, तुम उस पे जाओ, ऊपर जाके सबसे टॉप पे कुछ लिखो, जैसे C++, पाइथन एक साथ लिखना, इससे पाइथन लिख ले से. ठीक है, तो तुमने पाइथन लिखा तो पाइथन के कॉरस्पॉन्डिंग सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन सबकी लिस्ट आ गई. देखो दिस इज लाइक, अभी आइडिया ले लो कि क्या हो रहा है कि वी जस्ट टाइप पाइथन एंड C++. अगर तुम्हारे दोनों स्किल्स हैं तो तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन पाइथन एज वेल C++ दोनों में काम करती है उनकी लिस्ट आ गई. This helps you shorten your list to organizations जिससे तुम अप्लाई कर सकते हो regarding your skill set. Even though this is a way, I never recommend going this way. मैं बाद में अपने ways पे आऊँगा, but let's first get introduction to the program. Then you have to set, एक बार तुमने organization select कर ली,
then you have to give them a proposal कि तुम किस चीज पे काम करने वाले हो।